Good morning, students. My name is Shivani Tyagi, and I am the academic mentor of Bharat AI Labs. This summer training program is fully aligned with technical things to build and strengthen the coding skills. This summer camp provides a safe setting for students to set themselves free and have a good time. The majority of camp activities focus on having a fun while simultaneously teaching students coding skill, building designing skills, and fostering their creativity. Firstly, welcome to all in this camp, and thank you so much to all of you whoever joined this session on this particular time today, even on time today, right? So today we will learn about how we can design, how we can create stories, animation, games, right? किस तरीके से हम कोई भी स्टोरी को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम गेम्स क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम कोई भी अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं. So today we will learn about the main important part, that is Scratch. So this is the platform. By the help of this platform, we can easily create that kind of work or activities. So basically, what is Scratch? सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये स्क्रैच प्लेटफॉर्म है क्या. So it's a block-based visual programming language and website targeted primarily a children to help learn code, right? Like हमें किसी भी टाइप के टिपिकल कोड को सीखने की नीड नहीं है, like C, C++, Java, है ना? We can easily create our activities, we can easily strong our skills by the help of block coding as well. Users of the site can create online project using a block-like interface. स्क्रैच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ फ्री वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर, एंड इवन यू कैन यूज एज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन. आप इसका अपना खुद का जो सॉफ्टवेयर है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन यू कैन यूज. दोनों मेथड से आप जा सकते हैं. ईदर यू कैन go with the online method as well as offline method. So this service is developed by MIT Media Lab, has been translated into 70 languages and is used in most part of the world, right? So it's a very important and powerful platform for students to learn code, to design different things, correct? तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके हेल्प से हम बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं. एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं, मूवीज क्रिएट कर सकते हैं, गेम्स क्रिएट कर सकते हैं. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल प्लेटफॉर्म. सो टुडे वी विल लर्न हाउ वी कैन गो विद दिस.
कैसे जा सकते हैं हम इसके थ्रू? ओके, as you can see on the screen, it's an interface of Scratch platform. Right? So in this way, we can do any work on this Scratch platform. Now, I will tell you how we can run this Scratch platform on our systems. And even we will learn all the elements of Scratch one by one. Students, firstly, you have to open any web browser on your systems. Anyone, आपके पास आपके सिस्टम में जो भी वेब ब्राउजर अवेलेबल है, लाइक गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, anyone. And after that, you have to write here Scratch. And then press enter. Okay. And then you will receive the first link, that is here. You have to click on this given link. When you click on this given link, you will receive that kind of interface in front of you. And after that, we will receive two options, two buttons. First one is start creating and second one is join. So we will choose the first one, that is start creating, because we are going to start our journey with Scratch. Okay. And after that, you will receive the main area of Scratch platform where you can do all the activities which we have discussed earlier, right? And now you can see the complete interface is divided into various parts, right? As you can see on the screen, here's the left area, here's the right area, and in center, again, one area is also available, right? So how we can identify all these areas? So firstly, I will tell you, here is the area like file, edit, tutorials. So this is the menu bar where all the options are available of this platform. As today's introduction about Scratch, that's why I'm telling you all the things in detail. And tomorrow we will create a beautiful and innovative project on this platform. Okay? And tomorrow we will create a beautiful and innovative project on this platform. So before that, we will learn all the concept and all the technical things about Scratch. So here is the menu bar. And as you can see here, this is a green flag and this is a red stop sign. Green flag is the indication to start or run your project. And this red button is a stop sign. That means if you want to stop your project, then you can go with this button. Okay. And now you can see here, this is the coding palette. This is the coding palette. This is the stage area in which you can design your project, in which you can design your theme, your work. And here is the area in center. This is the script area. Script area means where you can design
your programs, you can set the instructions according to their requirements. Okay, so this is the area जहां पर हम वो टास्क परफॉर्म करेंगे जिसके बेसिस पर आपका प्रोजेक्ट रन करेगा. And these are the tabs like code, costumes, sounds. These are the tabs. You can switch according to their requirement by just clicking on them. Like if you want to click on costume, then your costume area is available. If you will click on sounds, then the sound area is available where you can set the sounds on their projects, right? And again, you can go with this because this is the main area where we can pick blocks to set the instructions. Okay. Now we will discuss about this cat image. As you can see, one image is here, that is cat. It is a by default sprite. The other name of image is a sprite here, right? यहाँ पर जो दूसरा नाम है sprite का, that is image, एक छोटी सी image जिसको हम set करते हैं अपनी डिजाइनिंग में, right? So we will discuss about the sprite first. ये sprite होता क्या है? Why we are using here? What is the role here, right? So this is the by default sprite. इसको सेट किया गया है पहले से ही. जब भी आप किसी भी स्क्रैच प्लेटफॉर्म को ओपन करेंगे, कहीं भी ओपन करेंगे, तो आपको ये स्क्रैच पर अवेलेबल होगी बिकॉज इसको बाय डिफॉल्टली सेट कर दिया गया. जैसे सेटिंग्स में हम कुछ चीजों को बाय डिफॉल्ट सेट करते हैं, सेम सिमिलरली इसको यहाँ पर सेट किया गया है. But what is the role of sprite? So sprite are the images on a scratch computer program screen, right? Every scratch program is made up of sprites because आप जितना भी डिजाइन क्रिएट करेंगे, that is only and only possible by sprites. Even backdrops as well. We can say sprite is an actor and actresses of our program. We can say these are performing main role in the designing. Like if I want to create a one girl image, then I can choose a girl image to pretend like this, right? So how we can choose a sprite, how we can rename the sprite. Firstly, we will discuss about this, how we can change the size of sprite, right? Firstly, I want to tell you about how we can delete this sprite from this area. Like if I don't want to put here, so what is the thing? Just select it, right? And now you can see on the down area, in the down area, here's the option to delete this sprite permanently. When you click on this button, you can see the stage area is properly free to design. The stage area is properly free to design according to our choices. Correct? So how we can choose a sprite from the files, right? Here's the area. You can see the option that is choose a sprite, in which we have 4 options, students. Like first one is search. By the help of this, we can choose any sprite from the library of Scratch. Here is the area that is paint, where we can create our own sprites. If I don't want to use predefined sprites, so I can make my own sprite by the help of paint window. Okay, and now this is the third option, that is surprise. If I want to take a randomly sprite, so I can pick this option. And if I want to use any sprite from the internet, like मैंने कोई भी sprite को डाउनलोड किया, like robot है, एक robot image मुझे चाहिए, and it is not available in our library, so I can go with this process. Like firstly, I would like to download from the internet, and then I can upload the sprite from our system. Okay.
Okay, now I'm going to show you how we can choose a sprite from the library. So just click on this option. When you click on this option, you will receive so many sprites which are already stored in our library, right? Like all animals, peoples, इनको classify भी किया गया है, categorize भी किया गया है. Like if you want to choose only animal sprite, then you can choose a uh, animal category and you can pick anyone. And the same like peoples, अगर मुझे किसी भी person को indicate करना है अपनी story में, अपने game में, then I can pick people, right? Any people like girl, boy, child, कोई भी आप अगर पिक करना चाहते हैं, बेन, सबको एक नेम भी दिया गया है इवन. So similarly, so many options are here like fantasy, dance, music, sports, food, fashion, right? So I'm going to pick up ballerina. So I'm just click on that. When I click on this image, that is a miniature image. When you click on that, you will see the result. The ballerina is available on our stage area, right? So in this way, we can easily choose any image. We can easily pick any image, right? Now I will tell you about the backdrop. Even you can change the sprite name from here. Like here is ballerina. If you want to write here girl 1, so you can give the name easily. Okay. And if you want to change the size, like here's the option to change the size as well. अगर आप किसी भी sprite का size change करना चाहते हैं, then you can go with this option. You can write here any size, like I'm providing here 20 value. As you can see the difference, it's a very small image of girl 1, right? So by the help of this option, we can increase or decrease the size like this. Okay. And now I'm going to tell you about the backdrop. What is the role of backdrop in this Scratch platform? So backdrop is an image. Again, it is an image. But what is the difference between sprite and backdrop? So backdrop that can be shown on the stage, it is a similar to a costume, except that is shown on the stage instead. They are located in the backdrop library. ये कहाँ पर मिलते हैं? हमें बैकड्रॉप लाइब्रेरी में मिलते हैं. और इसको हम कुछ है ये इमेज, बट किसके थ्रू कंसीडर करते हैं? जस्ट लाइक अ बैकग्राउंड इमेज. ओके. if I want to set a background image here on the back side of the ballerina, so what should I do? I'll go with the search option, and here are so many backgrounds. Like this is the background, I can pick like this, right? Okay. And now I'm going to tell you about some more options. I'll show you one thing. Even tomorrow we will create a very important and beautiful and interesting project on this platform. But before that, we will learn all the concepts in detail. So I'm going to tell you next thing, and that is about code, right? What is code here? Scratch has block based programming. I know and you know. आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं. हमें कोई पर्टिकुलर कोड नहीं लिखना है, लेंथी कोड नहीं लिखना है, रिटन फॉर्म में कुछ नहीं करना है, सब कुछ बना बनाया है. सिर्फ आपको क्या करना है? पिक करना है एंड सेट करना है. पिक एंड सेट वाला आपको रूल अप्लाई करना है. सो दीज ब्लॉक्स टेल्स द एक्टर व्हाट टू से और डू. आप जो भी यहाँ पर एक्टर और एक्ट्रेसेस सेट करेंगे एज अ स्प्राइट, तो वो ब्लॉक्स उनको बताएंगे कि किस तरीके से उनको काम करना है. ईच स्प्राइट इज प्रोग्राम्ड विद द स्क्रिप्ट. ओके. लाइक
I'm going to show you one thing. These are the codes. These are the different codes like motion. If अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो कोई भी पर्टिकुलर स्प्राइट है वो मोशन में मूव करे, लाइक फॉरवर्ड, बैकवर्ड, टर्न करे, एक्सिस सेट करे, देन वी विल गो विद दिस. if I want to set the looks, then I can choose this option. like उसको क्या करना है, कोई भी आपको कमेंट देना है, आपको उसके बैकड्रॉप्स चेंज करने हैं, आपको कोई साउंड सेट करना है, उसके साथ इवेंट्स क्रिएट करने हैं. लाइक इवेंट क्या होता है, इवेंट लाइक हम नहीं चाहते कि हम फ्लैग पर क्लिक करें तब हमारा प्रोग्राम रन हो. हम चाहते हैं कि जब हम यहाँ पर कोड पर ही क्लिक करें तो हमारा प्रोग्राम रन हो, या फिर हम स्पेस की सेट कर दें. स्पेस की अगर हमने सेट की, लाइक ये वाला कोड देख सकते हो, व्हेन स्पेस की प्रेस्ड, अगर स्पेस की हम प्रेस करते हैं तो आपका प्रोग्राम रन होना चाहिए, राइट. सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट your priorities in the coding. okay, now next one is ये जो एरिया है, ये जो आप ये वाला एरिया देख रहे हैं, that is programming palette. Programming palette is where the different script blocks are located. Different script blocks are here. Different type of script block include like motion control, looks, sensing, sound, operators, pen, variable, so many. तो इनके हेल्प से आप अपने इंस्ट्रक्शन सेट करते हैं. लाइक आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग, अ वेरी सिंपल थिंग. लाइक आई एम टेकिंग दिस मूव 10 स्टेप्स इन द कोडिंग एरिया, स्क्रिप्टिंग एरिया. व्हेन आई क्लिक हियर, तो आपको क्या करना है, जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे देन यू कैन सी द डिफरेंस. आप गर्ल को बहुत ध्यान से देखें, इट्स मूविंग 10 स्टेप्स, इट इज मूविंग, राइट. और अगर आप यहीं पर एक इवेंट सेट कर देते हैं, लाइक you can go with this flag as well, because आपको मैंने बताया कि flag भी सेम काम करेगा इस तरीके से. ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप इवेंट सेट करेंगे कि जब फ्लैग पर क्लिक किया जाए तभी आपका रन होना चाहिए. तो यही सेम टास्क आप इस फ्लैग के हेल्प से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं. ठीक है, ये देखिए. तो इस तरीके से हम कोड सेट करना सीखेंगे. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू 3 more things as well. Like you can see here, so this is the area. जिससे क्या होता है कि आपका जो स्क्रिप्टिंग एरिया है वो इनलार्ज हो जाता है और आपका जो डिजाइनिंग एरिया है वो शॉर्टन हो जाता है. लाइक अगर आपको एरिया चाहिए फॉर वर्क, आप पूरा एरिया कंज्यूम करना चाहते हैं फॉर कोडिंग, so you can choose this option. And if you want to balance all these things, you can choose this option. And even this is the full screen control where you can check the complete code as a result. When you click on that, so you can see your work on the full screen mode like this. When I click on this flag, you can see the result. Like हमने एक ही code set किया है, that is move 10 steps, so it is doing, right? So these are the tools and techniques. By the help of these things, we can easily perform our activities. Okay. If all things are clear, kindly give your thumb impression. Okay, that's good. Great. Okay. So I'm going to tell you one more thing. Similarly, जैसे आप यहाँ पर आपको ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, सेम आपको बैकड्रॉप पर भी प्रोवाइड किए गए हैं. यू कैन क्रिएट योर ओन बैकग्राउंड एज वेल, यू कैन अपलोड एज वेल, राइट. सो आई एम गोइंग टू शो यू वन थिंग. Like if I want to upload one sprite, so here is the option, right. I'm just click on that. When I click here, ये क्या करेगा, मेरे को मेरे लोकेशन एरिया पर लेकर जाएगा जहां से मैं कोई भी इमेज अपना सेट कर सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ. एंड देन जस्ट क्लिक ऑन ओपन. नाउ यू कैन सी द रिजल्ट, राइट. ये आपका इमेज आपके लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है, सो यू कैन अपलोड फ्रॉम द कंप्यूटर एज वेल if you need during the designing, during the coding, right.
Even you can create, here's a paint window. When you click on this, आप देख सकते हैं by the help of so many option you can create any kind of image. Like I'm going to take this circle, right? And again I'm going to take one more circle or a rectangle, anything जो भी आप चाहते हैं, ठीक है, like this. You can change the color as well. Right? आप इस तरीके से कलर भी चेंज कर सकते हैं. And then you can insert the same thing on the stage area. आप कुछ भी डिजाइन करें, you are free to design. Okay, so these are the main topics. मेन टॉपिक्स एंड मेन टूल्स जिनके हेल्प से हम किसी भी प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं. ओके, आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर एंड tomorrow we will create a new and effective project on this platform.